जब मैंने शुरुआत की लोग सिर्फ नाई कह के बुलाते थे। इतने सालों के बाद में भी आज भी मुझे लोगों से मिलना, उनके हेयर प्रॉब्लम को समझना और उनको सॉल्व करना इतना अच्छा लगता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ताकि जो वाइल्डनेस है ना, इट बिकम सॉफ्टर फॉर यू। A company with 400 crore turnover, operating out of 115 cities across the country. And the gentleman who owns that company jet sets between Dubai, Delhi, and Mumbai. Plush office in Bombay, engaging 45 corporate head honchos. And he's a barber. In Hindi, we call him Nai. Meet my friend Jawed Habib. Jawed. Hi. This has been amazing. A split from family business in 2005, which is just under 19 years. When you started, what did you inherit, except for the name that your father and grandfather gave you? I believe you didn't have capital in hand. How did it all begin? I think just a passion. I think my asset was a passion. My asset was the direction. My asset was, let's do something different. Let's become the biggest Nai of the world. You need money. End of the day, we all have great ideas as startups. In fact, your time, this world wasn't going. I mean, who knew that startup was an industry? I guess you were one of the first, earliest startup buds. How did it all happen without money? Well, how much did your father give you? Nothing. I think my father only gave me a few Salon. He just gave me a direction. He just gave me a surname, and that's it. And then I started. And I started with the Salon all over India. That must be around 40 Salon. And then it was all joint venture. So I used to go and work in every salon every month. I think that was the main thing which I did. And that has really made me the brand, because I used to work in Cochin, I used to work in Guwahati, I used to work in Jalandhar, I used to work in Patinda, I used to work in Ahmedabad, I used to work in Pune, I used to work in Chennai, I used to work in Bangalore. I mean, you name a city and I worked. It was a difficult split. Why? I don't think so. I mean, your father certainly didn't want you to get out, start your own business. He wanted you to be part of the family, be with your brothers. How did you manage to convince the brothers and the family that you want to take off on your own? No, I could not convince them. That's why I moved out. I think maybe my source was different. Maybe my thought process for a business was very, very different. And he thought that I'm like a gambler. And I think until you're not a gambler of a business, you can't grow. And that's why I had to move out. I was forced to move out. Is it just go and do your work? And what I got? It's just few running salon. What I got? No finance at all, but of course the mind was full of ideas, and that's why I moved to Bombay. I started my corporate office, a small corporate office with 5-6 people, and then of course a salon and an academy, because my forte, my direction is education, and I think education can make you anyone. It's education, not cosmetics, Jawed, not salon. There are thousands of stories like you. India is at the cusp of family businesses breaking up from the lineage of a father, and there are many like you who are better of the two brothers in terms of idea execution, but they're not being able to get out of the ambit of family business. What is the pain area? How did you handle that? I mean, it must have been very, very tough for that period. I don't know. It was tough because I was a part of media always. I was a part of Sunsilk brand. So people knew Jawed Habib. So in a way. Sunsilk happened before 2005? Yes, it happened in 2000. I mean, 2000, I was appointed as a brand ambassador for Sunsilk, which was for 9 years. So all their shampoo ad, all their print ad was featuring me. And of course, I was very handsome for them. And of course, I'm a good spokesperson. And I was talking sense. I was talking science. I mean, my father used to say hairdressing is an art. I say it's a science. I think that's the biggest difference. What is the gamble that you took which your father couldn't? My gamble was simple. सबसे बड़ा बनना है मैकडोनल्ड बनना है, सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, एजुकेशन डालना है, और इंडिया में सबके बाल काटने हैं. Why a few politician? Why a few Bollywood star? Every person should feel, we are the most smartest people on this earth. What was the lurking fear
What if I didn't succeed? I'd have to come back to my father and get back to the same saloon where my brothers are working with my father. What else could you have done in life? No, I don't think I was scared at all because I had skill with me. I mean, the skilling is my power. I mean, even if I do 10 haircuts a day, I'm okay. So my scale is not business. My asset is my hand, my skill. This is my power. कैसी चली शादी की तैयारी? Going good, Javed, but just look at my hair once. It looks so dull, lifeless. I don't know what to do with it anymore. Don't worry, I have the solution. Healthy hair is my wedding gift to her. Javed, I love this. This is amazing. This is like a brand new me. देख के नहीं, छू के बताओ. You know what? मैंने पहले भी ट्रीटमेंट्स और हेयर स्पास करवाए हैं और उनके बाद भी वो ऐसे ही दिखते थे. लेकिन आज they don't just look good, they feel amazing. Because they are healthy from inside. Oh, now I'm gonna be that bride with amazing hair. It is so damn difficult to become a brand. Company spends millions of dollars, crores of rupees for branding. How on earth did you become a brand without spending? It's just not your good look, is it? I mean, just good look and being verbose doesn't make you a brand. No, I think it was my idea. My idea was very different. You know, before me, for people, the definition of a good hairdresser or hair expert is I work for this film star. And my motive was simple. I want to cut everyone hair on this earth. And that's my business. But that's a great idea from a business point of view, which perhaps culminated into the 99 rupees Hair espresso. espresso, But brand कैसे बने? वो missing link कहाँ था? Education. I was doing seminar. I was doing workshop. Well, who promoted you? How did you get your face all over? Did you get the best PR agency to Not PR at all. for you? Not at all. No PR agency till today. You know what is my PR? My PR. So I had no PR agency. You know why I become a brand? Education. So what I was doing I was going to every city and doing seminar where I was teaching people how to cut hair, and I know. And when I was doing a seminar, I made sure I'm doing a press conference. So I was promoting my techniques through professional, and I was promoting my hair education for you how to look after your hair. So media has really helped me a lot, promoted me a lot. Yes, someone who's really talking genuine about hair care, not Bollywood, not politician. Going around and talking and giving seminars is not enough to build a brand. You have become a brand. How has that happened? I told people how to look after your hair. I told people how to stop your hair fall. Why did the media give you so much attention when they didn't give your father or your brother? Because your brother is equally good. Because I was talking such a simple thing. Use sarson ka tel, shampoo every day. Use soap. Just keep it clean. How to wash your hair. This education no one was giving. What people was telling, use my shampoo. This is the best shampoo. You know what I said? Use any shampoo. Follow my process. So that process no one sold. I sold it. Even today, what I'm selling a process, how to shampoo your hair. Do you know the oil doesn't work on dry hair? Oil will only work on wet hair. No one said this. I said it, and I gave a very scientific answer for it. If you're using oil in the night, you will lose hair. No one said this. ठीक है. नाम क्या तुम्हारा? हैं? कितने दिनों से काम कर रहे हैं? बैठाना रहता है. और कितने पैसे चार्ज करते हो साइकिल के? 30 रुपए कटिंग है सर. अच्छा. 30 रुपए दाढ़ी. अच्छा. साइकिल कितने कर ले लो दिन में? दिन में 150 हो जाते हैं. हो जाते हैं. जी सर. नहीं, जिसमें मेरा कंसर्न यही जानने का तुम काम कैसे करते हो? कैसे? तो गीले भी करते हो, ऐसे कर लेते हो, ड्राई करते हो? ड्राई पिकल लेते हैं. अच्छा. नहीं, ये कह रहा है बनाओ.
जब तो ही लग रहा है मेरे बाल काटते हुए। नहीं डर नहीं लगता सर, ज़्यादा मत करो यार। डरते नहीं ना। मतलब जब मैंने तुम्हारा कल पिक्चर देखा ना, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, सच्ची बात तो ये है। अच्छा, कहाँ क्या करना चाहते हो बताओ ना। हम यही काम मेहनत करना चाहते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं करना। अच्छा, तो तुम्हें अच्छी दुकान चाहिए, किराए की कितने की मिल जाएगी तुम्हें दुकान से? उल्टा कर, उल्टा चला। तो मैं देखना चाह रहा तुम काम कैसे करते हो। अच्छा, अब इधर के जब बाल काटोगे तो कैसे काटोगे? इधर के बाल करने के लिए ऐसे? अच्छा, तो सबको घुमा लेते अपने आप को? हाँ, कोई पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता। अच्छा, मतलब दिन में 4-5 क्लाइंट हो जाते हैं ना? हाँ हमारे। तो अगर तुम्हें कोई दुकान लेनी होगी, तुम्हें कितना पैसा चाहिए उसके लिए? अगर तुम्हें कहीं दुकान लेनी हो छोटी, कितना पैसा चाहिए तुम्हें बताओ ना? अरे लमसम आप जानते हैं कितना लग जाता है। अंदाजन कितना बताओ ना? लाख 1.5 लाख रुपये लग जाता है आपका। ये कहाँ दोगे? मशीन है वगैरह सब खरीदने में, जैसे बाल में हवा मारने वाली तो मशीन। दुकान कहाँ लगाओगे तुम? अच्छा, देखा, अगर हाथों में पावर है कोई नहीं रोक सकता। जब मुझे कल पिक्चर मिला तो मैं सच्ची सालों को विजिट करना चाहता था, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि हम लोग इधर के बाल कैसे काटेंगे। देखिए यहाँ का तो वहाँ बैठे हैं सब, तो इसका मतलब क्या हो कि क्लाइंट को घूमना पड़ता है, जबकि हम लोग कैसे बाल काटते हैं, हम घूमते हैं। यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, पर ये अच्छी चीज़ है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि मुझे काम करना है, चाहे मेरे पैरों में जान है नहीं, मुझे काम करना है। और कोरोना ने ये सिखा दिया, कोरोना एक चीज़ अच्छी सिखा दी कि कोई काम छोटा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने यही जगह क्यों चुनी? देखिए, मेरे दादा भी कभी ऐसे बाल काटते थे ना, तो मैं अपने दादा को फील करता हूँ ना, तो उसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं। देखो, मेरे दादा मेरे फादर सभी बाल काटते हैं, तो मैं फील करना चाहता हूँ कि मेरे दादा किस मुश्किल से गुजरे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अच्छा लगा तुम्हें मेरे बाल काट के? अच्छा लगा, साफ भी कर लो। जो तुम्हारा औजार है अपना औजार यूज़ करो, है ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि औजार गंदे होते हैं, अगर हाथों में सफाई है ना, डरना नहीं चाहिए इन चीज़ों से। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मॉडर्न सामान यूज़ हो रहा है। अभी मैं हैरान था कि रोड के ऊपर ये क्लिपर यूज़ कर रहे हैं, और ये क्लिपर महंगा क्लिपर होता है, सस्ता क्लिपर नहीं है। चलो, अच्छा लगा, मज़ा आया। I'd like to know, one fine morning, you drive down the road. In a stretch of 5 kilometers, you find a billboard springing with your face on the billboard, and that very smart face. How is that feeling? I mean, you are not a movie star, right? In the cosmetic industry, be that Biopic, VLCC, or any of these so-called celebrity brand owners, they don't have their face plastered on billboards. You had that. Was it a sense of pride, joy, accomplishment? What was it to see your face on billboards? I was normal. I was normal. I never felt great looking at my face on the billboard. I was normal. It's okay. It's just fine. I'm doing my work. I'm doing my work for today, and I'm doing the best work for today. If my today is good, my tomorrow is going to be much better. And there's no yesterday. You know why Jawed Habib is today? I don't believe in past. I don't believe in history. I believe in today. What's 8 hours. your brand value? Best. I'm very, very curious. 400 crore is your is the earning of the company from franchise. Yes. What is your brand value? How much are you a year? 100% to 3 figures. Not. I won't call That's it. very I won't aggressive. call What it is 4 that figure. number? What is that number? It can be any number. It can be anything. I mean, depends on a brand.
Depends on a brand. Why aren't you leveraging your brand name yet? It's all about the company. Because my success hasn't started yet. Because I'm not still satisfied with my brand. I want to still wait, I want to still work, and then maybe cash on it. There was an IPO that you had planned about 13 years back and you withdrew. What was the reason? Well, we filed for 60 CR IPO, and in fact, I was the first air brand who was filed for an IPO anywhere on this world. Why did you withdraw? No one thought. Why did you withdraw? The definition of hairdresser, cash collection. How? How are you going to save? How are you going to protect your investor? So for 9 months, I could not get a green card. Green card means a permission. And then we thought, let's withdraw. You're planning one again? I will, 100%. Because my dream, What my would dream. be the worth of that IPO? It is going to be in 4-figure. What is that number? I don't know. I think maybe 4,000-5,000 crore. Why not? Why not? 4,000-5,000 crore on a company which is No asset. no asset, no manufacturing, just one man. What happens if he's not there anymore? I'm going to give a nice figure on this. I mean, who will run your company if you cease to exist tomorrow? MBA people. I'm not an MBA, but my people will run by the professional. And I think once you run your company by professional, you will grow. I have idea. Everyone has an idea, but you have to be 100% sure my idea will work, and my ideas are working. If I said oil doesn't work on dry hair, I know few years people were laughing, and now every brand, big company, cosmetic company, using the same logo, the same language. So it means people think I have something in me. Who's going to run this company with an IPO of 4,000 crore? You need to create an infra beyond you. I mean, beyond the Jawed Habib that we know. Where is that? Today, it's not run by me. It's run by professional. What I'm doing I only do the brand building, I do the promotion, I do the press conference, I do the launch, I do the seminar. So my business is run by professional. Today, if I open 10 salon a month, which is a huge number, who's opening? My company, my people, my corporate home, my system. Because I always say, I want to become here McDonald's. When I say McDonald's, a system. The system I've created, I have people who are looking after my business. So I don't do anything. I just do one thing, education. I want to spread the education to everyone, whether professional or non-professional. Professional, they should learn how to cut hair. Non-professional, how to look after their hair. This is my business. At the end of the day, how do investors see your company? Futuristic. That's all right. Minus you, does the company has any worth? It's me who is everything. It's me. It's my mind. Isn't it eyes? Isn't it damn too risky to bet money on one man? He's not going to live forever. So, you're talking about a 4,000 crore IPO. You're talking about adding 120 stores every month, which is a humongous number. 120 every year, which is a humongous number. And it would call for a lot of money to be invested in the next 12 years. तो एक इंसान के ऊपर क्या इन्वेस्टर्स इतना पैसे वेट करेंगे? अभी तक तो चल रहा है. आगे क्या? अभी लगेगा. आज हम लोग कर रहे हैं बच्चों के कट की सीरीज. देखा कितने सारे बच्चे मेरे साथ में हैं. तुम्हारा नाम क्या है? हरिवंश. ओ यार, क्या नाम है यार? हरिवंश. हरिवंश है. हरिवंश. हरिवंश. अच्छा, हरिवंश. तेरा नाम क्या है? चैतन्य. ओ, इसका नाम है चैतन्य. और बच्चों के बाल काटना इतना आसान नहीं, बिकॉज इनका ये मुंडी हिलती रहती यूं है. ये मुंडी यूं हिलती रहती यूं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो हम लोग बालों को काट रहे हैं. देखा क्या कर रहे हैं? सिर्फ ट्रिम कर रहे हैं. तो बच्चों की मुंडी ना यूं हिलते रहते यूं, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है. बच्चों के बाल काटने में बहुत मजा आता है, बिकॉज आई थिंक आई लव कटिंग चिल्ड्रन है. जावेद, IPO कब ला रहे हो? बहुत जल्दी लेके आता हूँ.
1 साल 2 साल? अभी देखिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन टाइम है. आई थिंक लेट्स इलेक्शन बी ओवर फर्स्ट, मे बी 25. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि IPO के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, फिर इलेक्शन आएंगे, गवर्नमेंट बैठेगी, उसके बाद लीड मैनेजर ढूंढना शुरू किया आपने? हाँ, मेरी टीम काम कर रही है, बट इन्वेस्टर्स राजी है? सबको पैसा चाहिए ना. आप पैसा कौन बनाएगा? मेरे बाल बनाएंगे, बिकॉज मैं बालों को बोलता हूँ ब्लैक डायमंड. तो इसके अंदर जो पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है. और एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ग्रो करती है. मतलब हर महीने बाल कटने हैं, तो इस कंट्री की 140 करोड़ की पॉपुलेशन, सबने बाल कटाने हैं. तो दुनिया के इतने लोग हैं ना, सब जुड़े हुए हैं, बाल काटने वाले, बाल कटवाने वाले. ये पहला इन्वेस्टर लाना, इसका जो सिलसिला है बहुत मुश्किल था. बैलेंस शीट नहीं था, नंबर 1. कैसे आगे बढ़े? कन्विंसिंग, बैठना, बातें करना, बताना क्या दिमाग में पागलपन है. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टर ने कभी किसी नाई के ब्रांड में इन्वेस्ट किया था. तो उसके साथ बैठना बहुत ज़रूरी था. देखिए इन्वेस्टर को क्या चाहिए? अब बैलेंस शीट चाहिए. वहाँ तो कोई बैलेंस शीट नहीं थी ना, या अगर बैलेंस शीट थी भी ना, उसमें कुछ था नहीं. तो उसके साथ बैठ के उसको कन्विंस करना कि आइडिया क्या, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. ताकि उसमें शायद 6-7 महीने लगे थे. बट आई नो मैं जो बोल रहा था उसमें सेंस था, और शायद मेरे जो इन्वेस्टर थे वो शायद मुझसे कन्विंस हो पाए. और अब तो लाइन लगी पड़ी है. मतलब हर इंसान, हर इन्वेस्टर एक सैलून ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है. पर शुरुआत किसने की थी? मैंने की थी, बिना बैलेंस शीट. नया ज़माने का जो स्टार्टअप्स है, इतना सारे इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स आ रहे, क्यों नहीं है इंडस्ट्री में? क्यों नहीं एक और जावेद कोशिश कर रहा है कि मैं जावेद जैसे बनूं? कमी कहाँ है? उसका आंसर क्या है? पहले हेडर्सर को समझते हैं उसका माइंड क्या है. हेडर्सर के पास सिर्फ होता है 100-150 क्लाइंट, उसकी लाइफ है. उसके बाद में हर हेडर्सर बनना चाहता है ओनर ऑफ ए सैलून. वो कहना चाहता है कि मेरी शॉप चलती है. और अगर ज़्यादा एम्बिशियस होगा, मेरी 4-5 शॉप चलती हैं. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी 400 शॉप चलती हैं. किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी 1000 शॉप चलती हैं. किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे IPO करना है 5000 करोड़ का. आई थिंक ये जो सोच है ना, वो शायद सोच मिस हो रही. एन जॉन, अलिम हकीम, अधूना बबानी, इन किस्म का सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर्स क्यों नहीं आप जैसे फैल पा रहे? आपने बोला ना सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर, मैं वो नहीं हूँ. मैं बिजनेस मैन हूँ. वो सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर है, मैं बालों का बिजनेस मैन हूँ. मैं बोलता हूँ ये ब्लैक डायमंड है, मुझे इसको कैश करना है. उनके लिए 4-5 लोगों के बाल काटना, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल आना है, शायद वही लाइफ है. मेरी लाइफ पता है क्या है? हर इंसान के बाल काटने हैं, और ज़रूर काटने हैं, ताकि बोल पाएँ यस एक बारी मैं जावेद हबीब ब्रांड सैलून में बाल कटाने गया था. ये मेरी सोच है. आपका सैलून बाकी से जुदा कैसे, अलग कैसे है? खासियत क्या है? हमारी जो ब्रांड है वो एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है. हमारे 70 एकेडमीज चलते हैं, जहां हम लोग 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं. उनको जॉब चाहिए. और एक सैलून का जो सोल है ना, ये हाथ है. वो हाथों की पावर किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है. जावेद, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री स्केल अप करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते. एक रेस्टोरेंट जब 10 से ज़्यादा आउटलेट खुलती है तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते जो मैकडॉनल्ड्स कर पाए हैं. हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी में ये और भी बड़ा चैलेंज है. आखिर आप लोगों से काम करा रहे हो, अगर वो आपका क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो आपका नाम खराब कर रहे हैं. इस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? पहले हमारा सिस्टम समझना पड़ेगा. मैंने बताया कि हमारे 70 एकेडमीज चलते हैं. हमारे 70 एकेडमी हर स्टेट में चलते हैं. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, हमारा हर स्टेट के अंदर मास्टर फ्रेंचाइज है जो उस टेरिटरी को कंट्रोल करता है. नंबर 3, उस मास्टर फ्रेंचाइज के पास में एक बेंच है जहाँ हमेशा ट्रेनिंग चल रही है. तो वहाँ उसके पास 20, 25, 30 लोग हमेशा काम कर रहे हैं, सालों में काम नहीं कर रहे. तो अगर किसी सालों से कोई हेडर छोड़ के चला भी जाता है, स्ट्रेट अवे उसके पास रिप्लेसमेंट है. और रिप्लेसमेंट कौन सा है? ट्रेन लोगों का, जो किसी के पास नहीं है. तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो स्किलिंग है ना, ये मेरी पावर बनी है, जो किसी की पावर नहीं है. हर आदमी क्या सोचता है? अच्छी सालों बनाओ. मैं क्या बोलता हूँ, जैसी सालों बनाओ, लेकिन अच्छे हाथ रखो उसके अंदर काम करने वाले. But these ideas for you, you have brand managers who put these very revolutionary ideas, something which didn't exist in the industry. Talking to you, that's the idea.
तो आई स्टिल कट हेयर, व्हेन आई कट हेयर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, उसकी हमारी जो बातें चल रही है ना, वो आइडिया जनरेट करता है, और वो आइडिया जनरेट मैं अपने तरीके से बिजनेस में डालता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई लैपटॉप चाहिए, मेरा लैपटॉप क्या है, मेरी कैंची है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लैपटॉप चाहिए बिजनेस की पूरी प्लानिंग करने के लिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक सैलून चलाने के लिए दिन के अंदर 10-15 क्लाइंट चाहिए ना, उसको आप कैलकुलेट करो ना पैसे के हिसाब से, आप उसको कैलकुलेट करो मंथ के हिसाब से, और कैलकुलेशन बन गया। देखा, ये है मूवमेंट, और हमें एक जगह खड़े होकर नहीं करना, हमें इसको घूम के करना, ताकि मेरे बालों में इवन बाउंस आए। देखा, मैं घूम रहा हूं, जिगजैग कर रहा हूं। सो हमारे 80% बाल ड्राई हो चुके हैं, और अब मैं लेना शुरू करने वाला हूं सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको नीचे करेंगे। पता इसका फायदा क्या होगा, हमारे जो क्लिप का जो रोल है कम हो जाएगा। सो मतलब टिल्टेड हेड। उसके बाद हमारे सेक्शन होने वाले हैं हॉरिजॉन्टल, सारे के सारे हमारे सेक्शन हॉरिजॉन्टल हैं। और प्लीज कोई सा भी ब्रश यूज कर लो, आप ये वाले ब्रश यूज करो, छोटा करो बड़ा करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये पैडल ब्रश यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये एक तरह का अडेनमन या बेंट ब्रश यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, रिजल्ट सबसे सेम आने वाला है। I don't know whether you would want to share with me, but a lot of people would want to know, investors particularly, but a lot of youngsters who want to start their business, as to what is the formula for starting a new business. Convince yourself. Get back to 2005, Yeah. out of your home. Yeah. And it was not easy time, I'm sure. आपका फादर से बिछड़ना, अलग घर पे रहना शुरू करना. When you were married, I think you were much Yeah, married. I was then. married, yes. Yeah. With no financial support from him. What was the business plan? How did we go about? It wasn't so much grow that you're going to earn in the future. What was that first baby step? सी एक पैसा सबके पास है, अगर वो मेरी सालों में इन्वेस्ट करेगा, उसको मेरी सालों का ABC नहीं पता है, उसको ऑपरेशन नहीं पता है, तो मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल था। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, लेट्स डू अ जॉइंट वेंचर। आप मेरी सालों में इन्वेस्ट कीजिए, उसकी ऑपरेशन मैं हेड करूंगा, उसकी जो टेक्निकल टीम है वो मेरी होगी, उसकी ट्रेनिंग मेरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, रेंटल हमेशा हाई होते हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है उसको डर लगता है रेंट कौन पे करेगा। मैंने उसको क्या बोला, मैं हर महीने शॉप में आके काम करूंगा, और दिन में इस एक दिन में काम करने का आपका रेंटल क्लियर हो जाएगा। तो मेरी कंडीशन क्या थी, भैया मैं काम करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको महीने के अंदर एक दिन दूंगा, दूसरी चीज टीम मैं दूंगा, तीसरी चीज इसके सारे के सारे ऑपरेशन मैं हैंडल करूंगा, आपको कुछ मार्केटिंग मैं हैंडल करूंगा, आपको सिर्फ पैसे में शॉप में इन्वेस्ट करना है, और जो पैसा कमाऊंगा उसको हम लोग शेयर करने वाले हैं। और ये मैंने बहुत टाइम तक किया, मतलब मैं सोचता हूँ कि कम से कम मेरी 100 शॉप जॉइंट वेंचर पे चली है। इसका मतलब मैं सब जगह ट्रैवल करता था। How much do you charge now for a celebrity Jawed Habib haircut? What's your fee? जावेद हबीब नहीं है, जावेद हबीब सेलिब्रेटेड नहीं है, नंबर 1 इज दिस। जावेद हबीब अभी भी शॉप में बाल काटता है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सेलिब्रिटी बन जाते हैं मुझे अच्छे लोग के बाल काटने। मैं क्या कहता हूँ, मुझे आम आदमी के बाल काटने हैं, बिकॉज मिशन सिंपल है, इंडिया का हर इंसान मुझसे बाल कटाए मेरी ब्रांड में आके, और उसको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, तो एक ही बारी बाल आके कटाए। Is that a bit of humility कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। फिल्म बन रहा है आपको, तो उससे क्या हुआ, वो मेरे काम की वजह से बन रहा है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो मेरे काम की वजह से मेरी पहचान है। एक्टर कौन होगा? या कोई एक्टर नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं बाल काटने का एक्टर हूँ, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री के अंदर जो मेरे रोल को, it's a biopic on you. It's a biopic So on me. who's going to be playing your role? देखते हैं कौन मेरा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज इट्स नॉट इजी, बिकॉज ये जो मूवमेंट है ना उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। Secret बता दो। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एक्टर के पास मेरी स्टोरी जाती है, सबने क्या बोला, सुपर स्क्रिप्ट, बट
जावेद को एक्ट करना इतना आसान नहीं है और वो हमें क्यों? इसको समझना पड़ेगा। वो क्यों? बिकॉज का मूवमेंट बहुत है, वो टीचिंग करता है, वो बिजनेस करता है, सालों में काम करता है, सब कुछ तो करता है, मीडिया के साथ बात करता है। कुछ झलक रहा है आपके अंदर सेल्फ प्राइड। मेरी खड़े कैची हुए है, हो। मेरी कैची है। मैं सब कुछ हूँ, ये एक तरफ बहुत सेल्फ प्राइड झलक रहा है, लेकिन सर और कैंची की वजह से, सिर्फ कैंची की वजह से और कुछ नहीं, मेरी लुक की वजह से नहीं है, कैंची की वजह से। इस कैंची में जो मैंने एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब मैंने ये बात लैंग्वेज बोलनी शुरू की तो मुझे एक प्रेस वाले ने बोला आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो नहीं, आप सोचिए ना। और उसको मैं आंसर दे पाया। और क्यों दे पाया? बिकॉज मेरे अंदर उसकी पावर थी। एंड अभी वो लोग मेरे लिए वेट करते हैं तो ये कैंची की वजह से। शायद किसी ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं है। how does a human being, be that a movie star, a person like you who started from scratch and made it big, or any of the startup owners, how do they deal with pride, self pride? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबको खा जाते हैं। देखिए मैं टीचिंग करता हूँ, स्टेज पे शो करता हूँ, सेमिनार करता हूँ। सबसे पहले मैं उनको पता क्या बताता हूँ, अपने जिससे आपका घर चल रहा है पहले उसकी रिस्पेक्ट कराओ। आपके बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपके माँ बाप उसकी वजह से जिंदा हैं, तो पहले उसकी रिस्पेक्ट कराओ। और रिस्पेक्ट कब कराओगे? जब उसको फील करेंगे। और जब तक फील नहीं करोगे ना, आपको शर्म आएगी। क्यों नहीं बोलते इतने लोग क्या बोलते हैं? I'm here director, I'm this. I understand, but how do you deal with self pride? ये आप इंसान हो, सड़क पे चलते हो, आपका बिलबोर्ड में पिक्चर है, आपके ऊपर मूवी बन रही है, you know the media is after you all the time. How do you deal with this self pride? क्योंकि मेरी गलती वहीं से शुरू होती है। क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं नहीं अभी। क्योंकि जिस दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा ना, तभी घमंड आएगा। और वो क्या 4000 करोड़ IPO के बाद? नहीं, वो घमंड कभी नहीं आएगा। हो सकता है घमंड मेरे पार्टनर्स को आ जाए, मेरे इन्वेस्टर को आ जाए। मैं तो सेम ही रहने वाला हूँ, मैं अभी भी चेंज नहीं हुआ हूँ। आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर 20-25 ईयर, आई एम स्टिल द सेम। मैं दोस्त, मैं सबका दोस्त हूँ, मैं मीडिया का दोस्त हूँ, अपने क्लाइंट का दोस्त हूँ, अपने इन्वेस्टर का दोस्त हूँ। उनको पैसा कमाने दो ना, मुझे जैसा ऐसा रहने दो ना। चलो तुम्हारे बाल काटता हूँ, चलो तुम्हारे बाल भी काट दो। स्टॉप। तुम्हारी करी हाँ मैं भाई ये चीज जो है बालों में टेंडर फेस करता है, ठीक है। तुम्हारे बाल काटे किसने थे? हाँ यार बहुत अच्छा किया। और मैं सेम कैंची यूज कर रहा हूँ। जी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपना सामान यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ हमारी जो पावर है ना, हमारी कैंची है। हमारी पावर क्या, हमारा कंगा है। और मैं चाहता हूँ कि इनको एक अच्छा ठिकाना मिले ताकि लोग इनको परेशान ना करें। कैसा लग रहा है बाल कटवाते हुए? मुझसे बता ना, अच्छा लग रहा है ना? देखा, मैं सबके बाल काटने का मुझे शौक है। हाँ नहीं ऐसी काट, इससे हमारा घर चलता है, हमें क्या शर्म करनी चाहिए? बता ना। अपने बाल ना रोज शैम्पू करियो बस, है रोज शैम्पू करना। और ये सरसों का तेल मत लगाना बाद में, शैम्पू से पहले तेल लगा लेना, ठीक है। देखा, मेरे दादा ने भी ऐसे बाल काटे किसी टाइम में, तो मैंने सोचा कि मुझे वो फील लानी चाहिए। देखा, बाल काटने में मज़ा आ रहा भैया मुझे। जिसका मैं खाता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो काम करना, कहीं पर भी और किसी के लिए भी। और मैं कोई स्पेशल कैंची यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम जिसने मेरे बाल काटे, उसी कैंची से मैं इसके बाल काट रहा हूँ। देख रहे हैं ना, दिखाएं जरा कैसा लग रहा है। चलो हाँ भी करेंगे, घबराओ मत, करेंगे। हम भाई हैं एक प्रोफेशन के। सच्ची बात तो ये है, इसका घर भी कैंची से चलता है और मेरा घर भी कैंची से चलता है, तो हम एक तरीके से भाई हैं। Right, so one star who you would want to choose for your biopic, who you think can come closest to you in terms of emulating you? So who's that? आई थिंक एन एक्टर, उसका ये प्रोफेशन है,
और सबको सब लोग बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। आई थिंक सभी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स एक एनर्जी, एक आप किसको power- चाहते हो? मैं तो सभी को चाहता हूँ। आई थिंक जो रोल मेरा अच्छा प्ले कर पाए सभी कर सकते हैं। सो मेरे लिए आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर कौन मेरा रोल प्ले करे, बट मेरा रोल प्ले करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इस प्रोफेशन के ऊपर आज तक कोई आर के नहीं है नंबर वन। तो कहाँ से मुझे आप जज करेंगे, कहाँ से मुझे आप जानेंगे, कहाँ से मुझे आप सीखेंगे? इसका मतलब अगर एक्टिंग मूवी बनने में 1 महीना लगेगा, मेरे साथ 1 महीना गुजारना पड़ेगा। दैट्स द टफेस्ट थिंग। तो जिस एक्टर के पास टाइम है वही मेरा रोल प्ले कर सकता है। उठती हुई खबर ये है कि वरुण धवन आपका रोल प्ले कर रहा है, सच है क्या? मुझे अभी पता नहीं इसके बारे में। हो सकता है कि मुझे सरप्राइज दिया जाएगा कि मेरा रोल प्ले कर रहा है। ऑफकोर्स 4-5 एक्टर्स के साथ हुआ है, बट कौन प्ले करेगा आई डोंट नो येट। वेरी सून विल हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस कि यस आई एम गोइंग टू बी नेक्स्ट जावेद हबीब। When do I get to see you with Varun Dhawan in the press conference? When is the press conference Very for soon. your biopic? Very soon. Very soon. Very soon. I think we're going to announce very soon now who's going to play my role. Of course, the production house is fine. The writer is done. The scripting is done, because when you talk of a biopic, the main thing, the most difficult part is the scripting, which has taken 5 years. Oh, really? It has taken 5 years. They talked to everyone, talked to my wife. They have talked to me for 100 hours. They were just recording. Talked to my friends, talked to my partners. So scripting is done. And my next show will be with you and Varun Dhawan together. Yeah, let's see who's going to play my role. I don't know who's going to play my role, but of course, in touch with a lot of people. But my role is not easy role, not at all. It's going to be tough. I mean, उनकी एक्टिंग का एग्जाम होने वाला है। कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। How much do you charge for a haircut? Free. I don't believe that. No, there is a price, but Yeah, इसका so मतलब what's ये, it? पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पैसे नहीं, आप मुझसे बाल नहीं कटा सकते। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। You know, how easy is it to get an appointment with you? I work every Sunday at Lajpat Nagar. It used to be Khan Market, and I still cut here because for me, How easy is it to get an appointment? very easy, very easy. It is? Very easy. What's the number that one has to dial to get a haircut, personal haircut from Jawed Habib? It's mine. A simple number is Delhi number 011-436-46809. And how much do you charge? 5,000, but 5,000 doesn't mean you have to pay 5,000. If someone say कि I don't have 5,000, how much you have it? You pay it. Because मुझे बाल काटना है, मुझे वो पैसा कलेक्ट नहीं करना है। मैं अभी भी बोलता हूँ, इसी वजह से शायद ये मेरी पहचान बनी है। इट्स नॉट जस्ट अ मनी। कभी मैं फ्री हेयर कट कर देता हूँ। So, who are your celebrity clients? I mean, who are they? Name a few. Anyone who sits on my chair. Who are your celebrity clients in Bombay? No, I have no name for it. I think for me, I don't see their face. I don't see what they're wearing. I don't see how they are coming. What I see when they sit on my chair after the shampoo, I only see the hair. So for me, I do the same work. So for me, what name? It doesn't bother me. I know people say I work for Bollywood. I work in Bollywood for a client, not for one particular person. और वो इसलिए नहीं कि इससे मुझे सक्सेस मिली है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कला मेरी पहचान है और एक हैप्पी क्लाइंट की मुस्कुराहट हमेशा अनमोल रहेगी। Why did you join BJP? My profession, because I wanted to grow my profession, and I thought let's get government support for it. That was the only reason, not because I want to be MP, I want to be MLA. No, not at all. My profession, because I want to grow my profession. Election Simple answer. है, क्या टिकट मिल सकती है आपको? I can, but I'm not There ready. is a probability. No, Are you in I was conversation? offered in 2019, but I wasn't keen, because for me, जिसके लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए मैं ब्रीथ करता हूँ, जिसका मैं खाता हूँ, मुझे उसको पहले रिस्पेक्ट दिलानी है। ये तो सब चीज़ें होती रहेंगी बाद में, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी
तो ये प्रोफेशन मैं इतना रोल प्ले कर रहा हूँ, इतना रोल प्ले कर क्या सकता हूँ। सपोर्ट आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं? प्राइवेट बिजनेस को गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करे? देखिए, पहली बात तो हमें इसमें एजुकेशन चाहिए, सो स्किल इंडिया कैन बिकम वेरी बिग इन इट। स्किल इंडिया के बेसिस के ऊपर वी कैन डिफाइन उनके एजुकेशन के उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। लाइक यू नो, डॉक्टर हैज अ लाइसेंस, इवन हेयर शुड हैव अ लाइसेंस टू वर्क इन अ सैलून। जावेद, स्किल इंडिया आप बहुत कुछ किए हो, अगर आप गवर्नमेंट को इंडिविजुअली अप्रोच करते हो तब भी स्किल इंडिया का सपोर्ट आपको मिल सकता है। व्हाई जॉइन पॉलिटिक्स? मैं बताता हूँ, इंडिया के अंदर 3 करोड़ सैलून चलती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जिसके बाद जो किसी के पास नहीं है। और एक सैलून के अंदर कम से कम 3 लोग या 4 लोग काम करते हैं। तो इस कंट्री की 10 करोड़ पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है सिर्फ, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो मैंने अगर बोला कि मैं 10,000 लोगों को ट्रेन करता हूं हर साल, दिस नंबर कंपेयर टू दैट नंबर इज नथिंग। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। Are you cut out for politics? No, see, I'm By nature, do you think you can manage the intricacies of political affairs? देखिए, जब तक मैं अपने Because politics में जितना दोस्त होते हैं उतना दुश्मन होते हैं। तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप बुरा नहीं कर रहे हैं तो कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर मैं इस प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहा हूँ, दुश्मन बनते तो बनने दीजिए, लेकिन मैं इनको ऐसे दुश्मन लेके चल नहीं रहा हूँ। वो मेरे दोस्त ही हैं सारे के सारे। 4 साल बीजेपी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा है, देखो बहुत अच्छा रहा है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ऐसा होता है, बट मैंने तो कुछ फील ही नहीं किया आज तक। बहुत अच्छा हुआ। आई डोंट थिंक सो हमें ये बात बोलनी चाहिए, बिकॉज हम इस हिंदुस्तान के पार्ट हैं और उसके हर कल्चर के पार्ट हैं, तो हमें उसके साथ चलना चाहिए, सिस्टम के साथ। अगर टिकट का बात हो रहा है तो कहाँ से आप लड़ेंगे? देखिए, टिकट के बारे में मैं भी सोचता नहीं हूँ, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे प्रोफेशन को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है भी। हो सकता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, देन मे बी आई कैन थिंक इट ओवर, यस लेट्स डू इट नाउ। Javed, you've created a brilliant model, a very smart one. You are making money out of students. You know, you charge them a fee. The same students come back to your salon, and they work as trainees, and you make money out of customers. How did you hit upon this idea that I could make money out of both ends? 30-35 साल पहले वहां मैंने काम किया 2 साल, और 2 साल के अंदर मैंने वहां अपना प्रॉपर MBA किया कि वो चलता कैसे है। तो वो पहले ट्रेनिंग कराते थे और फिर काम कराते थे। वही सिस्टम को मैंने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर मैं मैकडॉनल्ड का सिर्फ 5% भी बन जाऊं, आई थिंक आई एम डन। So what's that model now? You know, you're going to keep enhancing your franchisee numbers, Yes. and you're going to supply the franchises with your students. That's mandatory. It's important to keep the standard, to keep the quality, and to keep the skill. It's very, very important. But that also means that these students are not going to stick to the franchises for long because they want money. It's okay. So they will move away at some point. But we train so many people, it's okay. India is such a big country. So the cost of franchisee management is very, very less because the cost of human resource is virtually nil. What is the cost of franchisee then? I mean, if I were to take your franchisee, I just have to pay rental and do the interiors. That's The it. resource cost is zero. That's it. It's a brilliant idea. And you are not an MBA. I am a practical MBA. I'm a practical MBA who breathe, who eat, who sleep, and who thinks beyond here. You haven't been to a business school and you've devised such a smart idea. Such a brilliant idea. What could the professional business management graduates bring on board? Or what do they bring? Or what are you looking for from them? I don't know. I think I just look into the eyes. That's it. Their CV is okay. But eyes is very important. And with eyes, I can just see, are they right? Are they visionary? Are they dedicated? Or are they going to stay longer with me? It's the eyes. I think the eyes is like a mirror. I look into the mirror. How often are you proven correct? Mostly. And when you look into the eyes, what is that you look into? I mean, what is that you're trying to read in? They are.
मैंने बोला ना, मिरर, आंखें क्या है, मिरर है ना, सारे सब कुछ बताता है, डिग्री देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आंखों में देखो, बातें करो, आंखों में देखो, पूरा 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 का पूरा पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। For a company like yours, knowledge and the intricacies of working is all that matters. So, aren't you scared that your CEO will step out of the company one day and join a competitor and duplicate this model? What competition will you Minus Jawed Habib, this model can still be duplicated. let it be? I'm not scared of it. They can't take my name. They can't take my brain. They can't take my pagalpan. And they can't take my power. I mean, I've been watching. I've seen so many people. They've come, they've gone, and and then say, "Oh, I'm going to start my own." I've seen it. You married very young. You know, you were I think I was married when I was 26. 27, 28, and your wife was 20. Well, she was 20, yes. Yeah. And I guess it was a love marriage out of... No, it was of- planned marriage. Yeah. It was So love- planned marriage means there has to be a transaction. There wasn't any transaction. She was a client, all right. She came to your studio, but it was love marriage. Well, we can call it love, but I call it client. All right. So why didn't you onboard her in the business? And when you started on your own, She's a part of on the board. She's a part of the board. that's different. But she was never hands-on. But of course, I had kids, and of course, once you have kids, their education is more important. And once they are married, then of course, so she's busy with my daughter. She's busy with my daughter's son. For somebody who looks so young for your age, hobnobs with pretty females in the celebrity world, how jealous is your wife? That's why she doesn't stay here. She's given that space to you to... No, I think initially she used to be, but now she's accepted this, because when I'm doing a show on a stage, I'm surrounded with the female only. So she's okay now. Yeah. She's accepted. You had flings in your life. I don't I'm think aware. so. I don't think so. No, I no, I'm no, no, aware. no, no, no. I do romance. This romance I'm is aware of your no, flings, but you're right. Rajan, we need to But- understand one thing. All that I didn't ask you if you had. No, I no. know you had. No, I what I'm asked saying you, is- how did your wife handle your flings? Know what I'm saying? We need to understand one thing. When you are in a salon, when you're working with a female salon, for that half an hour time, it's only you and her. It isn't about working. It isn't about your profession. It's about your person. The way you talk, the way you look, the kind of business that you do, the success that you've got so easy. I mean, it's just natural that you. राजन अगर मैं वो करता जावेद हबीब बनता नहीं. अगर मैं वो करता जावेद हबीब बनता नहीं मैं. But you regret that you got married a little too soon. No. You know, you should have got married after. No, when you no. got married to Shaheen, that you were that young boy looking for a path ahead in life. You were not a celebrity. Wish you were married some years later. No. उस दिन जो हमने डिसीजन लिया था, it was right for that day. And sitting today, we can't say that was wrong. So I think it was just a right and perfect decision of marrying Shine. Why? आज बैठ के हम लोग बोल सकते हैं मैंने कल गलत किया था. But that day, it was the best decision of your life. But a successful man, Yeah. particularly in the celebrity realm, is a very different man from the person that he was when he was not successful. So a lot of people who get married before their success regrets that, wish I was not married at that point. I'm not. I'm in a bonded. I'm not at all. I'm happy with my wife, happy with my son, happy with my daughter. I'm happy. And I think they're being a part of my success always from the first day. In my bad time, they were with me.
In my starting time, they were with me, so they should be with me all the time. And how did your wife handle your flings? It's not Was she flings angry? at all. I think it's all media, it's all the public. Flings is just a part of the profession, but those are not serious things. It's just a part of it. Was she angry? Did she throw things at you? How did you handle her? I know how to handle female. I know how to handle female because my profession is with female. No, I think it's just a part of her life. It's nothing serious about it. Javed, to come out of a family where you had two brothers who were also in the same profession, एक तरह से आपका कंपटीटर थे, और उन ब्रदर को मना के एक बिजनेस खड़ा करना और फिर साथ में रहना उनका, ये कितना मुश्किल था? कैसे हुआ? I think बहुत आसान था बिकॉज मेरे दोनों भाई मेरे फादर के प्रोफेशन के फर्स्ट ब्रांड के पार्ट हैं and they were very happy. They were very convinced with my dad. Maybe they were not convinced with my idea. So I don't think. मैं सोचता हूँ कि family and business these are two different things. अब दोनों को mix क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर लोग करते हैं. नहीं, मैं उसको mix करना नहीं आपका चाहता. फादर भी किए थे. मैं mix नहीं करता. वो मेरे फादर हैं. वो मेरे भाई हैं. मैं इसको mix नहीं करता. मैं mix क्यों करूँ? Competition के बारे में सोचूं क्यों मैं? There's no competition. और competition तो हो भी रहा है. एक सालों के लिए 500 लोग ही तो चाहिए. अगर वहां जाना है चले जाओ, कौन रोक रहा है? और जो मुझे मिलना है वो मुझे ही मिलना है. अरे ये जो भगवान अल्लाह ताला है ना, हमें उस पर भरोसा करना है. जो मुझे मिलना है वो भी मुझे मिलेगा. मैं किसी का खा नहीं सकता, मैं किसी का छीन नहीं सकता. तो हम ये क्यों डर रहे हैं कि उसके बाद क्लाइंट जा रहा है? जाने दो ना. हर महीने बाल कटना है. और क्लाइंट तो पता क्लाइंट कौन है? तोता है. उसको जहाँ जाना होगा जाएगा ना. वो आपका कभी होता नहीं है. तो जस्ट डू योर वर्क एंड मेक श्योर यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड कि मैंने अच्छा काम किया. और जब रात को सोना शांति से सो जाओ, मैंने अच्छा काम किया. अच्छा, आपने कहा कि क्लाइंट तोता है, जहां जाना है जाएगा, बट कंपनीज आर रोलिंग आउट ब्रिलियंट CRM programs, customer relation management programs. Retention is one huge issue with I mean, you mentioned McDonald's, a guy who's going and having a burger is also a client. So CRM के लिए क्या कर रहे हैं आप? मेरा CRM तो मेरा प्रोफेशन ही है. मैंने अपने एक फाउंडेशन भी शुरू मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और मैं सब उसी के लिए करता हूँ. आई नो बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं. मैं बोलता हूँ कि यार मेरी कॉम को मेरी जरूरत कर देता हूँ, मैं उन्हीं के लिए कर लेता हूँ. मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं उसके बियॉन्ड सोचूं क्यों? मैं उसी के लिए काम करूँ. मेरे लिए ना ये बाल है ना, इसके बाहर की कोई दुनिया है ही नहीं. सब दुनिया इसी के अंदर है. I came across a couple of franchises who says that, footfall is not adequate. We are not making money. It's become very expensive. Javed's franchisee isn't that easy anymore. They want you to do things to get people in the store. What is that you plan to do for getting more footfall? See, we need to understand this profession has changed with the time. When my dad started, it used to be known as beauty parlor. So 80% female were coming, not. They were coming for facial, for eyebrows, for waxing, for haircut. How many people? Only 20%. And what haircut we are talking? A satna cut or just a U cut? Then it has changed. It has become us, hair and beauty. So then from 80 to 20, it has shifted to 50-50. Okay? And then the salon divided again. Now it has become a hair salon, a makeup studio, a nail studio. So it's even being divided now. So on services, you can't make much money. You need to add a lot of things. You need to add merchandise. You need to add chemical. I think if they follow a mind, I think they all are making money. They are not making money, but they still want to be part of a brand. It means they're still making money, but only they excuse not to pay royalty.
Wella is making 40 crore out of you, right? Every year. And you get a percentage of that for 40 crore. Why just Wella? I mean, are you open to other new brands? You know, there are a lot of new generation cosmetic startups who would die to tie up with you. Are you open to them? See, we do corporate tie-up with color brand like Vela. We do tie-up with a lot of cosmetic brand like facial brand, a waxing brand. So I think we have around 10 type of companies who are with us as a corporate partner. So it is not just one company, it is not just one thing, but of course they are specialized into color cosmetics, so they are our partner for color cosmetics. How do you choose? I mean, are you open to a non-MNC, an Indian brand who is doing well, got the mix right, and wants to be part of your studio? Are you open to them, or you have criteria? No, I'm open to anything. I'm open to anything. I mean, where I get the maximum margin, I'm open to it. And of course, quality. Of course, quality, yeah. So I think both. Hey, Indian products are doing so good now. I mean, why all international brand? I think Indian products are doing so good. I want to be part of it, part of it. Sometime back, you had put up a poster outside some of your saloons that even Hindu gods come and make a beeline to have their hair cut in my saloon. There was a lot of backlash. Was it part of your so-called marketing gimmick? No, Or you kind of... what was the reason? Why did you bring Hindu gods? it wasn't me, number one. As I said, we work on a master franchise system. So it was one of our master franchise from West Bengal. They have done this. And he was a Hindu? Of course, sir. So I think they have done it. I mean, the company wasn't involved. I think the mistake they have done it, they need a permission of every poster. It has to be cleared by a company, which they couldn't do it. So it wasn't me. It was the What was the backlash like? It was bad, but it's okay. It's a part of profession. A couple of stores burned up. It happens. But How do you deal with when your stores are torn down, burned down? How do you? And I guess it happens quite often with you because of your religion. How do you deal with that? What is the message to everybody? देखिए, मैं कुछ जान के कुछ नहीं करता हूँ. सच्ची बात तो ये है क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है. वी हैव अराउंड 1000 पीपल वर्किंग टुगेदर. तो हर आदमी का अपना आइडिया होता है, वो पोस्टर की शेप में डाल देता है. बट पीपल थिंक मे बी इट्स डन बाय मी. But apart from that, being a Muslim and a businessman Muslim in India, and not a quiet businessman with a factory at some corner of the country, a celebrity Muslim businessman, how difficult is it to do business in India, or is it at all? I don't think it is difficult because if I haven't done anything wrong, nothing wrong with it. I think my partners are doing it, but I haven't done it. So I'm not scared of anything. And I don't feel anything. I feel like a Hindustani. I feel like an Indian. So I don't think so. It is bad. It's just a phase of 1 or 2 days time, but it's settled along with the time. All right, and a lot. But गलती मेरे पार्टनर करते हैं, माफी मैं मांगता हूँ आके. माफी मैं मांगता हूँ. मैंने हमेशा किया है. मैंने हमेशा बोला है कि कोई बात नहीं, मेरे पार्टनर ने गलती की, माफी मैं मांग लेता हूँ. और माफी मांगने में बुराई क्या है? जबकि मैंने नहीं किया, बट तभी मैंने माफी मांगी है. व्हाई? बिकॉज पीपल हैव इन्वेस्टेड इन माय ब्रांड एंड उसको उनका ट्रस्ट होना चाहिए कि उनका जो आगे कमांडर है वो तैयार है हर चीज के लिए. Coming back to the question of brand, what are the few things that you've planned for the next couple of years to scale up this brand beyond India? I believe you started a couple of outlets in Dubai, Singapore, even London also, some time back. So, is there scope for an Indian hair salon brand or an Indian celebrity hair salon brand to expand worldwide? No, not at all. Not at all. I think for me, India is enough with such a huge size, because India is not a country, it's a continent. और हमारे पास अराउंड 30 कंट्रीज हैं. तो मैं यही कर लेता हूँ. मैं क्यों 12 घंटे ट्रैवल करके लंदन जा रहा हूँ ओनली फॉर मार्केटिंग गिमिक कि मेरी लंदन में शॉप चलती है जिसका मैं खर्चा लगाता हूँ और वहाँ का हेडर्स को मैं समझ नहीं पाता हूँ. वहाँ की नीड डिफरेंट है. और एक चीज़ बहुत मैंने सीखी है, गोरा क्लाइंट गोरे हेडर्सर के पास ही जाता है. हमारी पॉपुलेशन कितनी है यूके के अंदर? 9%. और 9% में 7% लोग तो
वेट करते हैं कि जब इंडिया में बाल कटाएं तो 2% के लिए मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, अपना टाइम खराब करूंगा। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि बिजनेस करना है इंडिया में करो, दिल के साथ काम करो। हाँ, गिमिक है, सिंगापुर में सैलून चलता है नाम के लिए, गिमिक है लंदन में सैलून चलता है नाम के लिए, गिमिक है कीनिया में सैलून चलता है नाम के लिए, लेकिन बिजनेस या धंधा भारत में है। You've got it right. You've got it right, and FMCG companies, the large ones, understood it long back. But अगर हम आपका expansion देखें, अभी भी you're very metro-centric. छोटे छोटे शहर में आपका नाम है, लोग जानते हैं। सैलून है मेरा वहाँ, बहुत कम है। मेरा सैलून है। अगर 1000 सैलून को हम डिवाइड करें, उसका कितना परसेंटेज छोटे शहर में है? राजन, मैंने अभी बोला कि हमें 120 सिटीज में हूँ, तो अगर आप मेट्रो सेमी मेट्रोस की बात करें तो 20 ही होंगे, बाकी 100 तो मेरे गांव हैं। तो मैं टियर 1 में भी हूँ, टियर 2 में भी हूँ, टियर 3 में भी हूँ, और टियर 4 में भी हूँ। यू नेम ए सिटी, यू नेम ए टाउन, यू नेम ए कस्बा, यू नेम ए तालुका, यू नेम ए गाँव, मैं हूँ वहाँ पर। आप बताइए ना कौन सा टाउन है, कस्बा बताइए, मैं वहाँ गया हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं है। अगर मेरी 50 टाउन के अंदर बिहार में सैलून चलती है, मैं 50 टाउन में गया हूँ। अगर 70 टाउन के अंदर मेरी यूपी में सैलून चलती, मैं वहाँ गया हूँ। अगर 20 टाउन में उड़ीसा में मेरी सैलून चलती, मैं वहाँ गया हूँ। पर आपने अपना फ्रेंचाइजी रेट भी काफी बढ़ा चुके हैं पिछले 5 साल में, जिस वजह से छोटे शहर में फ्रेंचाइजी खुल नहीं रही है। मानते हैं ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि छोटे शहर में हमारा एक्सपेंशन ज़्यादा चल रहा है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारा ब्रांड एक नहीं है, हमारी ब्रांड 4-5 ब्रांड है। क्योंकि मेरा माइंड ये बोलता है कि जिसके पास जो पैसा उसके लिए ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। तो लोग आते थे कि मेरे पास 5 लाख है तो हमने 5 लाख की ब्रांड क्रिएट कर ली। लोग कहते हैं मैं 10 लाख है, मैंने 10 लाख की ब्रांड क्रिएट कर ली। बिकॉज मैं मानता हूँ कि तो नीड है ना, किसी के पास छोटा एरिया तो मैंने उसको छोटा ब्रांड दे दिया। तो मेरी ब्रांड शुरू होती है जो उसका एरिया होता है फ्रॉम 100 स्क्वायर फुट टू एनी नंबर। So you created 4 sub brands. One is Hair Espresso, okay, Studio, which is 99, which used to be 99, now it is 149. All right. Then we have a studio. Which is how much? Studio is around 300 plus. All right. Then we have Hair and Beauty, which is around 500 plus. Then we have the Jawed Habib, which is around 700 plus. Then we have a Pro, which is around 1000 plus. तो मतलब जितना जैसा पॉकेट में पैसा है उसके लिए मैं बैठा हूँ। You have a son and a daughter. You want both of them to be part of the company. What's your plan ahead? My daughter is a trained beautician from UK. My son has also done a course in hair. Of course, my daughter is married with a son, so she's too busy with the son at the moment. But in future, of course, she's going to join it. My son is based in Bombay, part of my corporate office. What are you teaching him now? You are, as an entrepreneur, you're part of the generation where you rebelled against your father, started from scratch. The kind of gumption that you have, somebody like your son who inherits that company may not have that gumption. Not easy for him. Not easy for him. To step into your shoes. Yeah, because people start comparing. And I think when you start comparing, you're not yourself. I mean, so what's the challenge that he's facing now? Yeah, huge challenge. Which is what, of inferiority complex? Complex. I won't call it inferior complex, but a complex is always there. It's like Amitabh Bachchan and Abhishek. It's the same story. I think it happens, with every successful father. Happens. How are you dealing with that? How is he dealing with I that? stay in Delhi, he stays in Bombay. So the distance helps him to kind of bloom. Yes, I think he's more into a business. I'm more into a technical. I think that's the biggest difference we both. All right, but all fathers are the same. They're possessive and they think that, I know the right stuff. Your father thought that at some point of time. You rebelled, you moved out. I'm sure your son is facing similar kind of instincts from you.
by you telling him what is right and wrong, because that's what you've learned out of your 20 years of experience. See, we have experience. And I think that No, experience is you've very experienced, but your father had experience too, but you proved him wrong. No, but So your son might want to do I something. shifted out. I shifted out. Fair enough, but your son might want to do something which you do not approve of. So how do you deal with that? He's open to it. I'm open to it. I'm open to it. But gradually he's going to move with me on. Maybe after 5 years, 10 years time. I think it happens in every corporate families. It's the same story. Happens what? A difference between a son and a father. It's a part of a corporate culture. It's a part of a successful families also. Do you have difference of opinion with him at the Of moment? course, 100%. 100%. And those, do they spill over onto the dinner table? See, what happened is, the reason for this is the education. The way I was educated, the way he's educated, the mindset is different. Very, very different mindset. Fair enough. So how do you deal with that young kid? How old is he? It's like 31. So he's not so young either. How do you deal with him? What are the challenges? I'd like to know a bit of that. Compare yourself with your father 20 years back and your son now, and he's challenging you the way you challenged your father. How do you deal with that, and what are those challenges? I think a simple answer. When he was studying in UK, after his study, I said, I know, do some technical course, which he didn't do it. I was annoyed. I wasn't happy at all. When he came back to India, he said, I want to look after the marketing. I said, no, you come on stage with me. When I do a seminar, just come and stand. Just learn how to control the crowd, how to talk to the crowd. If the media is there, start talking to the crowd. He wasn't comfortable. I didn't force him. And then I said, okay, you sit in the office. Now in the office, choose one direction. So marketing, okay, you do it. So I forced him for some time, and then I realized maybe it's not right. So he's okay. I'm okay with that. But of course, the legacy of Caesar, that may miss. I get a hint of sadness in your eyes. I won't call it sadness. I will call it, it's fine. Can I force it because he's 31? I can't force it. I can't make him understand, go and do a technical course. So what's your message to him? It's a huge brand that you've built up. It's no joke. Big responsibility to carry forward the brand and the legacy. Sometimes you have to sacrifice a lot for that. At the end of the day, your father, you've instinctively blood, a lot of things, and there is a mother to handle, right? So when there are differences between you and your son, who brokers peace? And this is the mother always, sometimes mother becomes, like a center point, she tried to compromise, okay, let's sit down and discuss. It's always the mother, it's always the wife side. And do you understand that for a company of this size that you're trying to build, you talk about a 4,000 crore IPO, you need professionals to be given precedence over your son. Do you understand that? Of course I do. I want to make my company like database. We need to follow a Tata system, where family is not important. The brand is important. The professional are important. So do you override your son when he... I do. Very often? Of course I do. Over a professional? Of course I do. The reason for that is because I'm still very active and I still... It's not about you being active. It's about professional vis-a-vis son. When a set of professionals who are qualified with experience comes to you with a proposal and your son says no, and you override it and it spills over to the dinner table, how do you handle that? No, I think we just sit down and talk it over. Of course, being with the experience, and we just come out with some conclusion. We sit down and talk. Because forcing someone is not a right idea. Let's sit down, talk, solve. You regret your father didn't do it with you? No. I'm not a person of yesterday. I don't believe in history. I'm a person of today. जो कल हो गया उसको भूल जाते हैं. I think ये मेरी सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट है. जब मैं रात को सोने जाता हूँ ना, मैं कल भूल जाता हूँ, और जो मैंने कल किया था ना उसको मैं रेज कर देता हूँ. तो मैंने नहीं सोचा कि मैंने कल क्या किया था, और नेक्स्ट डे जब मैं उठता हूँ ना, मैं हर चीज को नए तरीके से शुरू करता हूँ.
तो मेरे अंदर ये जो पावर है या मेरे अंदर जो सील है ना, इट्स लाइक आज मैं पैदा हुआ हूँ, विद अ न्यू आइडियाज, विद अ न्यू पर्सनैलिटी, विद अ न्यू इमोशन, विद अ न्यू डायरेक्शन. सो मेरी लाइफ में कल नहीं था और कल नहीं होगा, तो मैं जीता हूँ आज के लिए. जो 10 घंटे हैं ना, उसके अंदर आई वांट टू डू द बेस्ट. तो अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इट हैज टू बी द बेस्ट. इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, इट हैज टू बी द बेस्ट. इफ आई एम डूइंग अ हेयर कट, इट हैज टू बी द बेस्ट. इफ आई एम ऑन स्टेज डूइंग अ सेमिनार, इट हैज टू बी द बेस्ट. Javed, what do you do with all the billions that you earn? People invest, businessmen invest in real estate as tangible. The flamboyant ones buys cars, others buys houses and stock market investments. What do you do with your money? नेक्स्ट जनरेशन एंजॉय करती है, हम लोग एंजॉय नहीं करते. No, but you've made money enough in the last 20 years and pretty easy money. मुझे कार का शौक नहीं है. मुझे कपड़े पहनने का अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं है. मुझे खाने का शौक नहीं है. पीता हूं नहीं मैं. तो मुझे अपनी इस पे कंट्रोल है. तो अगर आपको मेरी स्किन अच्छी नजर आ रही है, मुझे बाल अच्छे नजर आ रहे हैं, बिकॉज मुझे इस पे कंट्रोल है. तो मैं शायद इन सब चीजों को मैं साइड में रख चुका हूँ. तो मेरे लिए So where do you put your money? पैसा, मैंने बोला ना, नेक्स्ट जनरेशन. मेरे लिए पैसा नो मीनिंग. मेरे लिए घर नो मीनिंग. मेरे लिए कार नॉट इम्पॉर्टेंट. आई मीन आई कैन गो एंड ट्रैवल इन ऑटो और ए बस और इवन ए कार. इट डजंट बॉदर मी एट ऑल. कपड़े आपने मुझे हमेशा ऐसे देखा होगा. And why? मैं पहनता हूँ हमेशा. Last 20 years, I see you in this 1970 Elvis Presley jacket. I mean, grow beyond it, man. It's outdated. Why do you wear this? I'm a rock star. Why do you wear this 1970 Elvis Presley jacket? I'm a rock star. And rock star कभी मरता नहीं है. अगर आपको अभी भी उसका नाम याद है, तो मरा नहीं है वो. तो I'm a rock star. And you've colored your hair blonde. I do henna. All I right. do henna. Okay, this is not colored. I do henna. Okay. People are surprised. People are surprised from henna. Can you get this color? And I say yes, we can get this color, but with my process. Javed, you're 58. No, I'm 60 plus. You're 60 plus. Yes. And the handsome guy who I get to see on the billboard, the picture must have been taken 20 years back when you started the franchising model. I think around, it was done in 2010, yeah, around 13 years back now. 13 years back. Why haven't you removed that picture for the older Javed? No, we have changed. No, but I see the same young man. No, every brand has one particular picture. So maybe you must have gone to my hair and beauty brand, right. and that brand owns that picture only. Okay. So every brand has a picture of me with a different pose. All right. But That's all my marketing. That's my marketing. Fair enough. But all of those pictures are of your younger self. Is that a challenge? You're growing old. in a business No. world. I think I'm just too busy to go for a shoot. All right, but is that a challenge of growing old? No. Where everything is you. I will never grow old. Number one is this. The reason for that, because I eat hair and I sleep with hair.